Hello friends, I am Aditya Kidari. Before starting off the topic, I just want to have a small announcement to make. On 3rd of August, that is the coming Monday, in the evening at 8 o'clock, I have a 1 hour session on an academy on the topic how to prepare for sociology optional for UPSC. So basically, I am going to give overall preparation strategy for UPSC along with proper strategy for sociology optional. So this seminar is completely free. You can register on an academy and you can see the lecture live. You can chat with me live, and there are going to be around 10 sessions like this where basics of sociology and other doubts will be clarified. So I hope to see you there, and you can definitely have discussion with regards to UPSC. It's completely free of cost, no money involved. You can come, you can register. Only thing is that you need a mobile. So kindly go and follow, get registered, and you can see this live. All right, thank you. So today's topic is 24% of Rajya Sabha members face criminal charges. All right, so this is criminalization of politics, very old topic. So let's discuss. Context. Association for Democratic Reforms has analyzed self-owned affidavits of Rajya Sabha MPs and released a report. So now this association has basically analyzed these affidavits, and accordingly they have released a report. According to these reports, there are certain key findings such as an analysis of 229 of the 233 Rajya Sabha seats that represent the states and UT showed that 54 MPs, that is 24% of the MPs, have declared criminal cases. They have declared criminal cases, and out of which 12% had declared serious criminal cases. Serious means quite like those punishment which is more than 7 years. So that is quite serious. हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे politicians दे डोंट हैव एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड. तो आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी पावर में है उनके ऑलरेडी इतने सारे क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी उनके नाम पे चल रहे हैं. सो आउट ऑफ द 229 एमपीज इन राजस्थान, 203 जो है, 203, 89% ऑफ दोज पीपल हैव एसेट्स मोर देन 1 करोड़. तो ठीक है, एसेट्स 1 करोड़ से ज्यादा हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं लोगों के पास. एटलीस्ट वो सब सच बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपने एसेट्स बता दिए. 1 करोड़ हो या 1 लाख हो, डजेंट मैटर, पर उन्होंने अपने एसेट्स क्लियर कर लिए. उसमें से काफी लोग क्रिमिनल्स हैं, तो या उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं. आई शुड से लाइक दैट, बिकॉज जब तक कन्विक्ट नहीं होते तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते. तो क्रिमिनल केसेस हैं. तो सुप्रीम कोर्ट के अब तक क्या एफर्ट्स लिए, मैं थोड़े से केस एनालिसिस आप लोगों को दिखाना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू लॉ की अब तक ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कौन से डिसीजंस दिए हैं जिसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स पे रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने. सो लेट्स सी. पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की केस है. मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू डिक्लेयर एंड पब्लिश ऑल क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देयर कैंडिडेट्स. तो अभी ये उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हर पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स है उन्होंने अपने सारे क्रिमिनल केसेस है उनको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए वो जिस इंसान को वोट कर रहे हैं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है. उसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जिन्होंने अभी ये जो एनालिसिस किए हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 की केस है. ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू फाइल एन एफिडेविट बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर डिस्क्लोजिंग क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम. तो 2002 में भी इन्होंने 2018 में रिएटरेट किया गया, 2002 में भी बोला गया कि एफिडेविट लिखना देना पड़ेगा हर कैंडिडेट ने. उसके अंदर ऑब्वियसली उसके एसेट्स और उसके क्रिमिनल केसेस का सारा काला चिट्ठा, या मैं बोल सकता हूँ सारी इंफॉर्मेशन, दैट्स द राइट वर्ड, काला चिट्ठा गलत शब्द है, सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके बाद पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 की केस है. अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ सिटीजंस टू कास्ट अ नेगेटिव वोट इन इलेक्शंस. तो आप नेगेटिव वोट भी कर सकते हो कि नो वोट, जो नोटा बोला जाता है कि नोटा वोट जो होता है बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि मुझे किसी भी जिन लोगों के नाम ऊपर प्रोवाइड कैंडिडेट्स को वोट नहीं देना है उसको नोटा वोट दिया जाता है. लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसके नंबर ऑफ जो वोट्स होते हैं उससे हमें पता चलता है कि लोग खुश नहीं है विद द रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स. बट दे आर लाइक दे कैन से ओके वो 25% के आसपास हुआ था वोटिंग पिछली बार. दैट इज अ ह्यूज नंबर वेयर 1/4 ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अगेन 2013 की केस है. स्ट्रक डाउन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 of the RPA, that is Representation of People Act, that allowed convicted lawmakers a 3-month period for filing appeals to the higher court or to get a stay on the conviction and sentence. So once you are convicted,
Earlier there was given 3 months time. In during this 3 months time, they used to come into power, and hence they used to get all the parliamentary privileges, and that it became very difficult for these people to be prosecuted under the law, to arrest them. So either this time was given them to appeal in higher court, or this time was given so that they can put a stay order on the conviction or the sentence. So ऐसा ये उन्होंने unconstitutional करके हटा दिया. It's a very good development. Again, Public Interest Foundation and others versus Union of India 2014 की केस है. Directed all subordinate courts to decide on cases involving legislators within a year और गिव रीजंस फॉर नॉट डूइंग सो टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. तो सारे जो सबॉर्डिनेट कोर्ट थे, तो उनको सबको आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप जल्द से जल्द जो भी लॉ मेकर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, उनके ऊपर कोई भी अगर केस चल रही होगी, यू हैव टू प्रोवाइड द डिसीजन एज क्विकली एज पॉसिबल. अगर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो गिव रीजंस टू द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. ओके, अगर महाराष्ट्र के केसेस हैं तो महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, उनको ये फटाफट केसेस का डिसीजन देना पड़ेगा. अगर नहीं दे पा रहे हैं, दे हैव टू गिव रीजंस टू द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट. ठीक है, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल. इन February 2020, लेटेस्टली देखा जाए इसी साल, द कोर्ट हैड आस्क्ड द पार्टी द पर्टिकुलर पार्टीज टू स्टेट द रीजंस फॉर सच सिलेक्शन. भैया आपने ऐसे लोगों को क्यों सिलेक्ट, ऐसे लोगों को क्यों टिकट दिया है जिनको क्रिमिनल बैकग्राउंड है, as also to why other individuals without criminal antecedents could not be selected. कि भैया बाकी जो लोग थे जिनको क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उन लोगों को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, उन लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया. इफ अ पॉलिटिकल पार्टी फेल्स टू कंप्लाई, इट वुड बी कंटेम्प्ट ऑफ दिस कोर्ट्स ऑर्डर. तो this is a very good development that you have to provide reasons why have you given a ticket to a particular person who has a criminal background, who has a pending criminal case going on. Why can't you give a ticket to stand in election with the person who doesn't have any criminal record? So this is a very good development when it comes to democracy in India. Now, what does the Representation of People Act say on this kind of a development? Okay, इसमें RPA का क्या कहना है? Currently under RPA, lawmakers cannot contest elections only after their conviction. So जब तक conviction नहीं होता है, उस conviction के बाद they cannot come in, they can't contest election. But still the case is pending, they can contest elections. Okay, ऐसा law बोलता है. Because a lot of time there is a situation where fake criminal cases are filed against lawmakers so that they cannot, people don't vote for them. So such politics do happen. Section 8 of the RPA Act 1951 disqualifies a person convicted with a sentence of 2 years or more from contesting elections. But those under trial continue to be eligible to contest elections. So as per Section 8, any person who is convicted for more than 2 years or 2 years or more than 2 years, that person cannot stand in election. He's completely disqualified. Okay, he cannot never stand in elections. But those who are under trial, those who are not convicted, neither acquitted, those people can contest elections. Okay, what is the way out? What is the future? हमें इसमें solution क्या लाना चाहिए? Political parties should themselves refuse tickets to the tainted. Obviously, political parties ने ऐसे लोगों को tickets नहीं देनी चाहिए. The Representation of People's Act should be amended to debar persons against whom cases of heinous nature are pending from contesting elections. Obviously, against those people who criminal cases of like such as sexual assault, murder, such cases they should be seriously debarred. Whether it is pending, whether the case is pending or not, such people should not be allowed to stand in elections at all. All right. But on the other side, democratic rights are there. People have the right to vote, right to stand in election. That is also legal rights which people have. But a balance has to be found out. So this can be a solution where such people is debarred. Specifically, very grievous, heinous crime kind of case has been filed against that particular person. Fast track courts should be decided. So that before elections itself, all those people over whom these criminal cases are pending, such cases should be given to fast track courts, and immediately the decisions should come out so that it is very clear whether that person can stand in elections or not. There should be no confusion. What happens, they certain, I can say this, that they bribe people and they keep the case pending, and once they come to power, then it's their government, they can do what they want. So hence fast track courts can be appointed. Bring greater transparency in campaign financing. Obviously पैसा कहाँ से आ रहा है? कई बार these people who have criminal backgrounds, they pay a huge amount of money donation to the political parties, and hence the political party has to give them a ticket because they have given a huge amount of funding. बहुत पैसा देते हैं ये खुद criminals. So campaign financing has to be sort out कि auditing accounting होनी चाहिए political parties की at a very very
transparent way where people should also come from where the political party is getting the money and where are they spending that money. The Election Commission of India should have the power to audit the financial accounts of the political parties. If this happens, India will be in a new revolutionary stage. If Election Commission of India, which is a constitutional body, if it gets the power to audit the financial accounts of political parties, lot of political parties will face sanctions, because there is democracy in India, but there is no democracy within a political party. There is RTI, so we can have a transparent government, but there is, till yet there is, political parties have been declared to come under RTI, but there is still a debate going on whether the functioning of political parties is transparent or not. So if this is allowed, that will be a fantastic development with respect to elections, a fair elections, free and fair elections without any people from criminal background. If they come to lawmaking, obviously it will be the betterment of India in the future. सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टू द वीडियो. आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए. कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगेन अ स्मॉल रिमाइंडर, 8th of August शाम को 8 बजे आई हैव अ 1 hour lecture, 1 hour session on Unacademy with regards to sociology optional and UPSC. Till then, Aditya Kedari signing out. Jai Hind.